Hari Om all. We are ready to begin Satsang. I take it you are all ready as well. Sprinkle water on yourselves and on the bedi. Om pavitraha pavitro va sarvavasthang gatopi va yasmaret pundarikaksham sabhayabhyantaraha suchi. Sip water from the palm of the right hand 3 times, meditating on Bhagwan. Om Keshivaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Now rinse your hands. Om Krishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Put on the kos ring on the ring finger of the right hand. Om Pavitre Stho Vaishnavyo Saviturvaha Prasva Utpunamya Chidrena Pavitrena Suryasya Rashmibhi Tasyate Pavitripate Pavitra Putasya Yat Kamaha Pune Tachakeyam. Now, using the thumb of the right hand, apply a chandan dot to your forehead. Om Chandanam Bandhate Nityam Pavitram Papanashanam Apadam Harite Nityam Lakshmir Vasiti Sarvada. Let the chirag or lamp. Om Bodhipa Tvam Brahma Rupa Andhakara Nivaraka Imamaya Kritang Pujang Grihas Tejo Pravardhaya. Om Deepaya Namaha. Sprinkle some water on the bedi. Om Prithvi Tvaya Dhrita Loka Devi Tvan Vishnuna Dhrita Tvancha Dharya Man Devi Pavitram Kuru Chasanam. We are going to read Ved mantras. Om 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 Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Dhyan Moolam Gurur Murti Puja Moolam Guru Padam Mantra Moolam Gurur Vakyam Moksha Moolam Guru Kripa. Om Swastina Indro Vidashavaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Starik Shorarishta Nemi Swasti no Brihaspatir Dadhatu. Om Payah Prithivyam Payah Oshadhishu Payo Divyantarikshe Payodhaha Payaswati Pradishaha Santu Mashyam. Om Vishnoratamasi Vishnu Shnaptresto Vishnu Syurasi Vishnu Dhruvasi Vaishnavamasi Vishnavitva. Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudra Devata Ditya Devata Maruto Devata Vishwe Deva Devata Brihaspatir Devatendro Devata Varuno Devata. Om Dyoho Shantirantariksha Gun Shanti Prithivi Shantir Apah Shantir Oshadhayah Shanti Vanaspatayah Shantir Vishvedevah Shantir Brahma Shanti Sarvagun Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi. Om Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva Bhadrang Tanna Asuva
सुशान्तिर्भवतु। ॐ आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो तब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ देवानां भद्र सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यं उपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिदं अर्यमनं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करात्। ॐ तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्ग्रावानः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्यायुवम्। ॐ तमीशानं जगतस्तस्तु शस्पतिं धियन् जिन्वमवसेहुमहे वयं पूषानो यथा वेदसां सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पृखदश्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारि ऋषितार्युर्गन्तोः। ॐ अदितिर्द्योर् अन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनोयजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहौजो मयि प्राणपानौ। ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृभनानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। ॐ आयुष्यं वर्चस्य गुं रायस्पोषमुद्भिदम् इदगुं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राय विशताद्दु माम्। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिः भवतु। ॐ हे रम्भेहि अंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पतित्रक्ष लक्ष लाभ पितुः पितः नागास्य नागहारत्वं गणराज चतुर्भुज भूषितः स्वायुधैर्दिव्यै पाशाङ्कुश परश्वधैः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतः यागत्य गृहान् त्वं पूजां कृतुं च रक्ष मे। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोक्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। ॐ ध्यायेदाजानुबाहुं
धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासुवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिललोचनं नीरदाभं नाना अलङ्कारदीप्तं ददत मुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थितः तत्कृतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागपाशं च घण्टां डमरुकसहितं अंकुशं वामभागे नाना अलङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां तान्त्रेलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्द प्रियाम्। ॐ सीताराम पवनसुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार राम लखन सीता
सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित ईसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक काटते काबे। ऊँट पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जब
जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया। सिंदूर वदना मंगल रमणा, सिंदूर वदना मंगल रमणा, सिंदूर वदना मंगल रमणा गणपति बप्पा मोरया, सिंदूर वदना मंगल रमणा गणपति बप्पा मोरया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया। अष्टविनायक मंगलदायक, अष्टविनायक मंगलदायक, अष्टविनायक मंगलदायक मंगल मूर्ति मोरया, अष्टविनायक मंगलदायक मंगल मूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया। ओम सीताराम पवन सुता हनुमान, राधे कृष्ण की जय। Jai Sri Krishna to all of you. We are doing this evening verse number 30 from the Bhagavad Gita and we're doing chapter 3. Okay? So let us first read the verse and then we'll look at the meaning of the verse. Mai sarvani karmani sanyasyadmat sanyasadya chetasa nirashir nirmamo bhutva yudhyasva vigata chvaraha. So let's read this again. Mai sarvani karmani sanyasyadhyatma chetasa nirashir nirmamo bhutva yudhyasva vigata chvaraha. So, in this verse, Sri Krishna is talking about Karma Yoga. Let us look at the individual words that Krishna Bhagwan uses in this verse firstly. So he says, Mai. The word Mai means to me. Krishna Bhagwan is referring to himself. Sarvani refers to all. Sarva means all, so Sarvani here means all. And Karmani means actions. Sanyasya means dedicating, and Adhyatma Chetasa means with your mind fixed on the self, that is fixed on me, on God. Nirashiha means to be without hope, and Nirmamaha means to be devoid of the feeling of mind. Vigata Jwaraha means cured of mental fever, and Bhutva means becoming
And then yudhyasva means fight. So he's saying to Arjun that you should dedicate all your actions to me with your mind fixed on me. That is the self of all. And freed from hope and the feeling of attachment and cured of mental fever, you should fight. So in this verse then, Sri Krishna Bhagwan actually provides the essence of the entire chapter in this one shloka. And in fact, it's one of the most important shlokas in this chapter. You can actually consider this verse to be karma yoga in a nutshell. So there are three topics that Sri Krishna Bhagwan covers in this verse. The one is, what should be our attitude while performing actions? The second is, what kinds of actions should we perform? And the third one is, how do we make our actions more efficient? So, firstly, then he talks about the attitude that one should maintain while performing actions. And he says that one should continuously dedicate oneself, or dedicate the action rather, to a higher ideal before, during, and after the action. So the higher ideal can be anything. It can be family, it can be an employer, it can be the nation. But we should consider it to be pure and divine, because that purity or divinity is indicated by the word mai or me in this verse. Now, what is important here is that we must never get out of tune with what is the higher ideal. So it's like when I'm talking to my friend, I'm constantly talking to my friend on a hands-free telephone. I can do that while I'm performing other actions. In fact, while I'm performing all my actions. So we can use the ritual of the puja to practice this act of dedication. But the key is to do it constantly, not just during the puja. So we must be continuously keeping in mind the higher ideal, not only during puja, but during all our actions, constantly keeping in mind the higher ideal and why it is that we are acting. Right? And we will know whether the action that we are performing is in the service of a higher ideal, or whether it is in the service of our own ego, by the feeling that we will get once the action is complete. So if I have a feeling of a deep sense of peace and contentment after the action was performed, it is perhaps means that it was in the service of a higher ideal. So the attitude is that we must always be performing our actions in the service of a higher ideal. Secondly, he asks us to use our intellect to guide us so that only correct actions, those which are our duties, swadharma, are performed by us. So the intellect should discard all actions that are unethical or illegal. And Krishna Bhagwan urges us to strengthen and reinforce the intellectual power of discrimination, which is referred to as viveka. And then the third thing is Sri Krishna Bhagwan gives us a formula to make our actions extremely efficient. So the energy, the mental energy that we have, the mental focus that we have, it can leak out of our system. It can leave the system
through three sources, three reasons why that mental energy or that mental focus can be lost. One is because we brood over the past. Second, it's because we become anxious about the future. And the third one is because we become overly excited about the present. So when these things happen, then that mental energy, that mental focus, it leaks out of the system. Now, how does this leakage take place? Firstly, asha. When you look at the word asha, asha means harboring expectations. And it is similar to living in the future because it gives rise to anxiety. And when we harbor expectation, we are actually insulting the present moment. So that is why he uses the word nirashiha. Nirashiha don't have any expectations of the future. Then he uses the word mamatva, nirmamo. Nirmamo means mamatva. Mamatva means minus, M-Y-N-E-S. And it implies that we are giving undue importance to our past achievements. In other words, we are living in the past. So no matter what happened in the past, it usually gives rise to sorrow if we brood over it. And then the last thing is jwara, which he also refers to in this verse, which is extreme excitement and agitation in the present. And this destabilizes our mind and intellect. So if we don't want the mind to be destabilized, we must, he says in this verse, stop harboring expectations for the future. Don't brood over the past, and don't get extreme excitement over what is happening in the present. So these three tendencies then, ultimately, they take our attention away from the present moment. They strengthen our ego and it diminishes our efficiency. Therefore, a true karma yogi then will always live in the present moment and give complete and undivided attention to the task at hand, no matter what the task is. And that is why Sri Krishna Bhagwan urges us in this chapter to give up the expectations of the future and anxiety over the past, and not to be overexcited with what is happening in the present. Jai Sri Krishna. Jai Shri Ram. Today we are reciting from the Balkan, Doha number 156. We will first commence with the Ramayana Stuti. Jehi sumirat siddhi hoy sitaram gananayak karivar badana karo anugrah soy sitaram buddhirasi shubha guna sadana मूक हो ही वाचाल सीताराम पंगु चढ़े ही गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल सीताराम द्रवो सकल कलिमल दहना नील सरोरुह श्याम सीताराम तरुण अरुण बारिज नयना करो सो मम उर्धाम सीताराम सदा क्षीर सागर शयना कुंद इंदु समदेह सीताराम उमा रमन करुणायना जाहि दीन परनेह सीताराम करो कृपा मर्दन मयना बंदो गुरु पद कंज सीताराम कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज सीताराम जासु वचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय
उमापति महादेव की जय। कथा आरंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। हे रामा सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए, सिया सखा सहित भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नीलमहीधर सिक सम, देखी विशाल बराहु। छपरी चले हु हय सुकुटी, नृपहा कि न होई विबाहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम हरे रघु राम हरे, राम हरे रघु राम हरे। आवत देखी अधिक रब बाजी, चले हु बराह मत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिली गयहु बिलोकत बाना। राम हरे रघु राम हरे, राम हरे रघु राम हरे। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुवर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाहि मुग भागा, सिर बस भूप चलेहु संग लागा। गयहु दूरी गन गहन भराहु, जह नाहि न गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु। राम हरे रघु राम हरे, राम हरे रघु राम हरे। बोल बिलो की भूप भर धीरा, भागी पेट गिरि गुहा गभीरा। अगम देखि नृप अति पछिताही, फिरहु महाभन परेहु बुलाही। राम हरे रघु राम हरे, राम हरे रघु राम हरे। खेद खिन्न क्षुधित तृषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयहु अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। नीलमहीधर शिखर सम, this Raja Pratap Bhanu, engaging in this act of hunting, has now sighted a large boar, and Tulsidas ji describes it as Neel Parvat ke Shikar ke Saman. So it was a very large in size, it was huge, and it had a unique color that probably looked very attractive to the king. So people that engaged in hunting would obviously look for a challenge when they were doing this, and the king saw this challenge in this large boar. घोड़े के चाबुक लगाकर तेजी से चला और उससे सुअर को ललकारा कि अब तेरी बचाव नहीं हो सकता. So he started to approach this boar with his horse and obviously threw a challenge to it. And the boar could see that it could not escape from the challenge. They were face to face.
अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला. Seeing that the horse of the king was approaching, making quite a loud noise, the boar started to run. राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया. Immediately the king drew his bow and arrow and started to fire out arrows. But this large boar, whoever it was, lived up to the challenge. सुअर बाण को देखकर ही धरती में दुबक गया. So the boar managed to crouch low to the earth and avoid the onslaught of arrows. राजा तक तक कर तीर चलाता है. The king fired one arrow after the other at high speed. परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है. Somehow this boar was magnificent not only in its appearance, but with its speed and its intelligence, and it avoided all of these arrows and was able to spare its life. वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था. So sometimes the boar was visible to the king, and sometimes it was not visible to him. और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ लगा चला जाता था. The king became more and more angry that he could not easily fell this boar, and he chased it with more determination and vigor. सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया. The boar went deeper and deeper into the densest part of the forest, जहां हाथी घोड़ा का निबाह नहीं था. A place in the forest that is so dense and difficult to enter, even elephants and horses could not enter that part of the forest. राजा व्याकुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था. The king now started to experience the difficulties posed by the forest. And being alone, he could now feel the true brunt of this. फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा. He didn't give up either way because he was so fixated on killing this animal. राजा को बड़ा धैर्यवान देकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा. So this animal could sense now that the king was not going to give up very easily, and decided now that he must look for an alternate plan, a change in his strategy. And what did he do? He went and he entered a very, very dark and deep cave. उसमें जाना कठिन देकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा. पर उस घोर वन में वह घुसा रास्ता भूल गया. By this time now, the king felt partially defeated and feeling extremely tired and thirsty. He lost his way in this forest. बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया. The king now started to search for water because both him and his horse were extremely parched. They could no longer manage without water, and he started to search for a lake or a river or a pond from which he could get water. Now let us put into perspective this katha about Raja Pratapabhanu. We have read earlier on that he was quite a pious king, and he engaged in many yajna, different types of puja, etc. How has it come to this that he finds himself parched in the densest of forests?
hunting. Many of our texts speak or tell us about kathas of kings that engaged in this activity called hunting. And every one of those stories ends up with the king in an extremely terrible and regretful position. It means, therefore, that irrespective of what kind of ideas come to mind or reasons the king could find for engaging in hunting, none of them would be meaningful enough to justify the difficulties that one finds themselves in because of engaging in such terrible acts. In Satyanarayana Vrat Katha also, we read about this king who refused the prasad. He refused to go and bow down on the banks of the river where the gopas, the cowherd boys, were performing puja. Why? After killing a creature with bare hands and engaging in such an act, who would feel comfortable approaching a place of prayer and purity? So the king, having made this decision to go hunting, has now allowed his mind to be attacked. He has brought upon or attracted a weakness that is now causing his judgment to be disturbed. The kind of protection that he was enjoying by doing all the different kinds of pujas and yajna is now being pierced by this indiscretion. Engaging in such acts of violence on creatures that are weaker than us remove the armor that we may be coated with through all our pious acts. And what happens when armor is removed? All kinds of negative energies are able to attack us. So the judgment of the king was impaired. He became fixated on killing this creature. He became obsessive to the extent that he lost his judgment and ended up being lost in a deep, deep forest. So this letting of our guard down, knowing what is better, and yet allowing a moment of insanity to prevail, can cause us to endure many kinds of difficult hardships. And therefore, we should always strive to ensure that we are always alert. We are always aware of what is right and what is wrong, and stay away from being tempted by things which seem to be normal to others, but in reality are actually terrible. It is totally unfair and incorrect for an armed human being, a person, a being which is at the highest rung of the species of life, human life. We have hands, we can stand up and walk on two legs, we can manufacture weapons, we can even command our abilities over creatures like horses to assist us to hunt and chase down defenseless animals that have no weapons. No reason in the world can justify such an act. The king has now attracted more difficulties for himself. In the weeks to come, we will read about what this act of hunting has initiated for the king. Jai Shri Ram. Katha visarjan hota hai, suno veer Hanuman, आसन को प्रभु जाइए, सिया सखा सहित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय. जय श्री राम. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी
जानकी वल्लभा कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, पैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर
जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओम सीताराम पवन सुता हनुमान राधे कृष्ण की जय। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल जलगाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांति गाली राधिका चमक रही आली लगन में लाले वनमाली प्रमग सोलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे गगन तो सुमन राशि बरसे बजे मेरा चंग मधुर मेरा दंग कालिन के संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चाहते प्रकट वही गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह गंगा
मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनूहरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। You may put your hands together. We now recite the concluding mantras. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मत्कारुण्य भावेन रक्ष त्वं परमेश्वर। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, जगत जननी पार्वती माता की जय, शिव शंकर भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण जी की जय, महावीर स्वामी बजरंग बली की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, गंगा यमुना सरयू सरस्वती मैया की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम।